डॉक्टर के पास आने वाला हर मरीज सिर्फ एक रिपोर्ट, एक स्कैन या एक केस नहीं होता। वो अपने साथ एक कहानी लेकर आता है। अब कहानी में एक नए किरदार की एंट्री हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई ने हेल्थ केयर सिस्टम को रफ्तार दी, डॉक्टरों को जानकारी से लवरेज किया और तकनीकी समझ विकसित की। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी के सहारे मरीजों की कहानी को समझ लेना काफी है? क्योंकि हेल्थ केयर की असली कहानी मशीनों से नहीं, रिश्तों से शुरू होती है। इसलिए आज मंथन होगा कि भविष्य की मेडिकल एजुकेशन कैसी हो। साइंस के साथ सेंसिटिविटी जरूरी है, इनोवेशन के साथ इंटीग्रिटी जरूरी है और इंटेलिजेंस के साथ इमेजिनेशन भी जरूरी है। एआई के युग में बदलती शिक्षा और बदलते हेल्थ केयर लैंडस्केप पर विशेष संवाद करेंगे डॉक्टर सुभाष चंद्रा। प्लीज वेलकम डॉक्टर सुभाष चंद्रा। Thank you. Good afternoon. When you joined the medical studies, what was in your minds? Why am I coming to study medicine? To help people, sir. To help people. Yes. That was in your mind. Yeah. How will you help? कुछ सोचा था उस समय में? So उस टाइम पे इतना क्लियर आइडिया नहीं था, but I just knew that I wanted to help people so that, just like in my own way, howsoever I can serve to the society, I wanted to do that. Okay. When did you join? So 2022. 22. Now, what do you think now? So it's still the same. It's a very, I would say I didn't think about the challenges that come with the field, but I am still happy. You now know that there are a lot of challenges. Yes. Good. Thanks for being very honest. Yes. To be part of a greater purpose. To be part of greater purpose. Yes, sir. What kind of greater purpose? So serve the humanity. Serve the humanity. Yes, sir. Wonderful. Wonderful. Good. क्या नाम है आपका? Sir Chetan Kashyap. Yes. Hello, sir. Good afternoon. So for me, science was always a very interesting subject, and that is why I came into this field, and I wanted to know more about human body and how the whole science behind it works. And basically, I really like this field now because as we work on patients, we get to know a lot of things about the society, about the things that are inculcated in society, and also some of the I would say medical conditions that come along with the kind of geographical areas that we live in or the kind of economical backgrounds that we come from. So it is a very nice field. We get to know a lot about the community that we are living in, and in a way we can help each other. So I really like this field because of that. Wonderful. So is the medical education or medicine is only a science of diagnostics and treatment, or is it beyond that? Sir, I believe that there are two parts to medicine. There is the science of medicine and then there is the art of medicine. The science is what we are taught and the art is what we learn after being with patients. And so the art of medicine is the things that cannot be taught, like dealing with patients, having empathy, and what to do in morally challenging situations and all. That is not being taught. You cannot directly teach a person what exactly empathy is. They need to feel that themselves. Empathy can also be taught. Communication can be taught. And with the communication comes the empathy, other softer aspect of human life. And that is a subject which can be taught. But anyway, good answer. Thank you.
I would say the pedagogy of medical education itself has got this flaw, where the softer aspects of dealing with a human being is not being formalized in the education system of medical system. Patient ko generally, we all doctors, we treat them as a case, isn't it? Case of pneumonia, case of hypertension, case of cancer, case of this and everything. बल्कि अब तो केस का नंबर भी डाल दिया जाता है, पेशेंट का नाम की बजाय बेड नंबर या केस नंबर. How many of you will agree that a doctor should not treat the case but should become a steward for the journey of his patient's life? So I think there needs to be a balance between that. If you get too attached to your patients, then that can hamper the way that you treat them. That's a dialogue of Munna Bhai. Huh? So, but there needs to be a balance. If you get too attached to them, then आप जैसे उनको treat करेंगे. No, I'm not telling you to get attached. See, when a patient comes, you treat only the symptom of that patient. And this fact, ये जो सच्चाई है, ये पुरानी थियोरी हो चुकी है. Only to treat symptoms. अगर इंडियन सिविलाइजेशन में आप हेल्थ और मेडिसिन को देखें, हालांकि हमारे वैद्यों ने उसको इतना सस्ता बना दिया कि वो हम लोगों ने, हमारा विश्वास ही हट गया आयुर्वेद से. आयुर्वेद इज नथिंग बट साइंस ऑफ लाइफ. हाँ, उसका लिटरल मीनिंग इज ऑल्सो साइंस ऑफ लाइफ. हमने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, लेकिन उसमें सिम्टम्स को नहीं ट्रीट किया जाता. उसको क्या बीमारी है वो उस बीमारी को ट्रीट करते हैं उसमें. ये फ़र्क शायद आप लोगों को मालूम हुआ ज़रूर. एंड इन द मॉडर्न मेडिकल साइंस, इन एलोपैथी, यू आर ट्रीटिंग द सिम्टम. तो इसलिए वो कहते हैं आज अब जो प्रैक्टिस, जो देर आर गुड डॉक्टर्स एंड देर आर एक्सीलेंट डॉक्टर्स एंड देर आर दी डॉक्टर्स. वो अगर पेशेंट की लाइफ जर्नी को समझ के उसको ट्रीट करते हैं तो उसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं. दिस हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड ऑल्सो. How many people of you have seen, or how much time you, if you are a third year student now, you must be going to the hospital next door and meeting the patients, isn't it? Other than asking on the disease particularly, how much time do you spend with the patient to talk different things? Generally, if you are spending 10 minutes, out of 10 minutes, how much time do you spend talking something else other than his treatment? Sir, as a dental student, we usually work on patients starting from third year and then continuing till fourth year. So when we are working on patients, usually the patients that come to dental setups, they are very apprehensive of the treatments. So we need to talk to them so that they can feel little ease while they are sitting on the dental chair. So we usually talk about their life and they ask questions as well if they have any confusion regarding the dental treatments or any other things. So we do talk to patients while the treatment is going on. Okay, very good. That's wonderful. That perhaps hallmark of Sharda University, perhaps. Many places these are not being taught. What is the best part of this medical education, according to you? Authorization to wear the white coat in itself is the best part, no? कि नहीं है? I want to ask you, young girl, yeah.
So I can just say that medical field is very fascinating to me, according to the way that I can learn many things about the human body. And also the white coat, when I wore it the first time, it was very a proud moment for me. Very good. So she has given a very honest answer. Yeah. So when I wore the white coat, I just wanted to diagnose and treat the people. I wanted to make my surrounding pain free and yeah. So may I also say something? Haji. So for me also, of course, white coat was the first thing that we all wanted and we deserved, like we got that. So it was fascinating. But now as we are approaching towards internship, so now it feels like it's our duty to serve the patients and everyone. So as we work in clinics and the patient, first of all, we are treating them. And if it takes like on the same day or if it's a long-term patient, once the patient is satisfied and they're happy and even if they say, thank you, doctor, अच्छा किया आपने. So that's the best part, what I feel in this medical field, is satisfying the patient in the end. Like whatever it takes, my long hours or anything, but if the patient is satisfied with me, then the job is served. So that's the best part, what I feel. And I would like to continue that in my further future. What happens when, despite you applying the best medicine, best effort, still the patient is not recovering and is getting worsened? What do you feel that time? So at that point, obviously the nature, it's the part of nature and everything is happening. But I feel I have to give the best from my side as far as I can give, because after all, I have that knowledge and the patient is relying on me. So obviously I have to make him comfortable that that's the best I can do. But obviously what God's decision is, so that I can't deny for it. But yeah, on my part, I want to make the patient feel as far as I can do. But in the end, what happens? So you recognize that there is a nature, there is something else, Yes. which also plays a role. There is a power beyond what our force is. So yes. So I would say in a normal language, that suffering is universal. Yes. Okay, thank you. We have with us today a robotics engineer who has given a lot of things in the medical science, technically. He's alumni of Sharda University. His name is Divakar Vash. Please welcome. Put your hands together to welcome him on the stage. Come, Divakar. Thank you. Now, Divakar is an extraordinary young computer science and robotics engineer based out of Noida, NCR. He's built a world-class healthcare hardware systems in India at a very young age and with massive lower cost than normally things are available. He has created mind-controlled wheelchairs. He has created ventilators costing what is costing normally 20-25 lakhs rupees in 5 lakhs of rupees. So welcome Divakar to this Subhash Chandra show. Thank you, sir. What would you like to tell the viewers who are sitting and watching this show at home? So first of all, thank you for inviting me. आज के डेट में हम सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हम सब कुछ बड़ा करना चाहते हैं. We all want to give something to the nation and to the world. Yeah. And at this point in time, I believe with AI, with where India is, we have the power to become a superpower in another decade or two. That is what I want to say. So you want to make India a superpower? Absolutely. And we are at the right place at the right time. Okay. How many of you will agree that India can become, Divakar can make India a superpower? You believe? I am challenging Divakar and I am saying, Divakar, without certain other aspects of life, other aspects of education, various other activities,
you cannot change or you cannot make India a superpower. I 100% agree with you, sir. We have to change all that we have learned. We have to retain our values. And at the very same point in time, we have to understand that we are just not building for the nation, but we have to build for the world. और इसका मतलब सिर्फ सस्ता बनाना नहीं, क्वालिटी, टॉप नॉच क्वालिटी की डिवाइसेस बनाना, टॉप नॉच क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाना, टॉप नॉच क्वालिटी का R&D करना, नॉट जुगाड़, बिकॉज जुगाड़ हैज़ बीन इन आवर DNA and we need to undo that. And that is how we will become a superpower. देखिए, ऐसा है कि मेडिकल फील्ड में और जब आप लोग डॉक्टर बन के निकलेंगे और सोसाइटी में जाएंगे, वहाँ काफ़ी हद तक कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क प्लेज a big role, and mostly I've seen in the hospitals and medical facilities that there is a collaboration and teamwork. There isn't much difference between a doctor, nurse, or other physiotherapists or other people. But mostly other places like your field or many kind of things, the collaboration and teamwork kind of subjects are not even taught in the education. Absolutely, sir. Absolutely. So do you think that is the weakness of our education system? I think not just the education system, but the value system. हमें साथ में मिलके we have to work together, we have to accomplish together. And sir, the best example, I am an engineer. I am a robotics engineer. मैं robot बनाता था, and I made one of the few robots that the world has never seen, like mind control robots, brain cloning technologies, Manav, which is India's first completely made in India humanoid robot. But then I went to AIIMS, New Delhi, to speak about all the innovations. And मैंने वहाँ पे अपने robots को बेचने की कोशिश की. And what really happened surprised me. So a neurosurgeon said कि दिवाकर ये robots वगैरह छोड़ो, आप मेरे साथ एक बार ward में चलो. Sir, I was surprised. AIIMS जैसे हॉस्पिटल, AIIMS दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे they said we do not have enough ventilators. Imagine, AIIMS New Delhi saying we do not have enough ventilators. Why? Because one, they are very expensive to buy, very expensive to run, and once they break down, they stay in a bad shape for a very long time because सारे import कर रहे हैं हम. तो क्यों नहीं हम इसके लिए कुछ करते हैं? And that is how we ended up making a ventilator. So एक डॉक्टर सामने आए, एक मैं सामने आया, हमने कोलैबोरेशन किया और कोलैबोरेशन करके एक ऐसा वेंटिलेटर बनाया जिसने कोविड में बहुत सारे लोगों की जान बचाई. एंड वी आर प्राउड टू बी द लार्जेस्ट वेंटिलेटर मैन्युफैक्चरर who has delivered the maximum number of ventilators during that point in time. Very good. That's wonderful. So we see that even the best medicine in the world cannot touch the deepest layer of human suffering. People still age, people will get sick, people will still lose their loved ones. So medicine attends to the wounds of the body. It cannot heal the conditions of being alive. इसका कोई solution क्या है मेडिकल साइंस के पास? आप सारे लोग मोटर व्हीकल एक्सीडेंट पेशेंट्स और स्पाइनल इंजरी के केसेस से फेमिलियर होंगे, जिसके अंदर फुल बॉडी पैरालिसिस हो जाता है. कई बार आपको ट्रैकियोस्टमी करनी पड़ती है ताकि पेशेंट वेंटिलेटर पे कनेक्ट हो सके और ज़िंदगी भर उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है. आप सब लोगों को पता है, आई एम श्योर आप MBBS के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को पता होगा, राइट? स्पाइनल इंजरी पेशेंट्स. सर, एक ऐसा पेशेंट हमें मिला जो कि पिछले 6 साल से वेंटिलेटर पे था और जो ना कुछ बोल सकता था, ना सांस ले सकता था. उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत थी ज़िंदा रहने के लिए, और वो केवल इशारों से सारी चीज़ें कम्युनिकेट करता था. 6 साल से एम्स के अंदर था. हमने उस पेशेंट को अपने वेंटिलेटर पे घर भेजा. सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि भाई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, आप सिर्फ इनको जिंदा रख सकते हो. द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड, विद इन 6 months जब वो अपने घर गया, उसने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दिया. अरे उसने थोड़ा थोड़ा हिलना शुरू कर दिया. अच्छा. क्यों? क्योंकि आज मेडिकल साइंस इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता. आज भी एम्स में they are doing study about it कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, because there is no regeneration that can happen in the nerves, but it happened. So there are so many things sir जो हमें आज मेडिकल साइंस को शायद नहीं पता है, but कुछ चीज़ है जो एम्पैथी से
जो ह्यूमन टच से, आसपास की सराउंडिंग से हील होती है, जिसके बारे में बहुत रिसर्च की शायद ज़रूरत हमें करने की ज़रूरत है। आप इस बात से सहमत हैं कि ऐसा हो सकता है, संभव है? मेडिकल साइंस में जो व्यक्ति 10 साल से अगर वेंटिलेटर पे हो और वो अचानक घर जाए और बोलना भी शुरू कर दे, तो मिरेकल है, एंड मिरेकल्स डू हैपन। एब्सोल्युटली सर। चलिए बताइए, आपकी जर्नी अभी कैसे चल रही है? सर, विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड पीपल अराउंड यू, आज के डेट में हम इंडिया के सबसे बड़े वेंटिलेटर मैन्युफैक्चरर है। उसके साथ में आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म, और इसके बारे में थोड़ी सी और मैं बात करना चाहूँगा। बताइए। हमने एक ऐसी चीज़ इन्वेंट की है जो उसे हम नेचुरल ओजेम्पिक कह सकते हैं, जो कि पेटेंटेड भी है। सो ये क्या कहा आपने? नेचुरल ओजेम्पिक। सो आपको बस उसे पानी में मिला के लेना है और आपका वेट ऑटोमेटिकली हर महीने बिना कुछ किए कम होने लग जाएगा, एंड इट इज़ 100% नेचुरल। कितने लोग चाहेंगे वो मेडिसिन वजन कम करने की? हाँ, हाथ रेज करिए। लॉट ऑफ यू। हाँ, अच्छा। सो एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। मैं एक रोबोटिक्स रिसर्चर जिसने पहले रोबोट बनाया, रोबोट बनाने के बाद मेडिकल डिवाइस बनाया, और मेडिकल डिवाइस बनाने के बाद एक ऐसे सेमी न्यूट्रासूटिकल फार्मा कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट की। ये मेरे करिकुलम का पार्ट नहीं है, ये कांस्टेंट पार्ट है कि आप कहाँ कहाँ पे एक प्रॉब्लम को ढूंढ सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि मैं कहाँ पे आके कुछ नई चीज़ बना के दुनिया की हेल्प कर सकता हूँ। आज के डेट में हर तीसरा इंसान मोटापे से जूझ रहा है और हर कोई पतला होना चाह रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए। मैं ये सारी बातें आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एज अ डॉक्टर आपको हमेशा से आपके दिमाग में एक चीज़ रही है कि मैं एज अ डॉक्टर लोगों को देखूंगा, अपने पेशेंट्स को ट्रीट करूंगा, उनको एक बेहतर ज़िंदगी दूंगा। ये हमें स्टार्टिंग से पढ़ाया गया है। लेकिन एक और तरीके से आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, और वो तरीका है बाय डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़, क्योंकि आप ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन डिजीज़ को अच्छे से पहचानते हैं। विद द हेल्प ऑफ AI आज आपको अपने साथ में एक इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप केवल AI से बात करके, जो कि आपके लिए एक असिस्टेंट इंजीनियर का काम करेगा, आप टेक्नोलॉजीज़ की इंसेप्शन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजीज़ को बना सकते हैं। नॉट ओनली मेडिकल डिवाइसेस बट ऑल्सो फार्मा। आज के डेट में हम मैक्सिमम APIs को इम्पोर्ट करते हैं। आज हम सारे जेनरिक्स बनाने में बहुत आगे हैं, बट आज भी पेटेंटेड ड्रग्स के मामले में हम लोग पीछे हैं। जबकि इंडिया में कॉस्ट ऑफ रिसर्च, कॉस्ट ऑफ फॉर्मुलेशन, कॉस्ट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च इस दुनिया में सबसे सस्ता है। तो क्यों नहीं हम नए ड्रग्स, नए मेडिकल डिवाइसेस को बनाएं? क्यों नहीं बना पा रहे हैं हम इंडिया में? मेरे ख्याल से सर, जैसे घोड़े के ऊपर हम लगा देते हैं कि सामने ही देखना है, वैसे ही हमारे ऊपर भी लगा हुआ है और उसको हटाने की ज़रूरत है, ताकि हम हर तरफ देख सकें कि हम सिर्फ मरीज़ को देखने के बजाय मरीज़ के लिए सोल्यूशन निकाल सके। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आप लोगों ने नाम सुना है? क्या किया था उन्होंने? पेनिसिलिन का इन्वेंशन की थी। पेनिसिलिन इज़ एन एंटीबायोटिक जिसके बेसिस पे आज मेडिकल साइंसेज एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर वो नहीं होता। अगर वो सिर्फ ट्रीटमेंट ही कर रहे होते, if that doctor was just doing the treatment, he would have treated 100,000, 10,000 people. But because of his invention, आज के डेट में करोड़ों अरबों लोगों को वो एक नई जिंदगी दे पा रहे हैं। और आज जब वो नहीं भी हैं, तब भी उनकी जो इन्वेंशन है, इट इज़ गोइंग फॉरवर्ड। बट आप ऐसे जगह पर हैं जहाँ पे AI आपके साथ है, आपका देश आपके साथ है, स्टार्टअप इकोसिस्टम आपके साथ है, और आप एक ऐसे जगह पे बैठे हैं जो कि एक फार्मा एक्सपोर्टर है टू द वर्ल्ड। सो व्हाई नॉट? आई थिंक इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी हाइप हो रही है, उतना ये कहना कि मैंने देखा है, मैंने जाके कुछ वर्कशॉप्स अटेंड की हैं अमेरिका में, वो कहते हैं साहब अब तो बड़ी जल्दी हम AI की वजह से एंटी एजिंग स्टडी हमारी बड़ी तेज़ी से चल रही है,
हम लॉन्जिविटी बढ़ा देंगे, लोग 150 साल जिएंगे। जी सर, इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले एक डॉग्स के लिए FDA अप्रूवल का प्रोसेस शायद कंप्लीट भी हो गया है, जिसकी वजह से कहते हैं कि आपके डॉग्स जो 10-15 साल, आपके पेट्स जो 10-15 साल जीते हैं, उनकी उम्र करीब करीब 20-25-30 साल तक बढ़ाई जा सकती है, बट अभी भी क्लिनिकल ट्रायल फेज में है। अब देखने वाली बात है हमें तो, मैंने जितना स्टडी किया, और मैं गया हार्वर्ड में, डेविड सिंक्लेयर नाम के एक व्यक्ति हैं डॉक्टर, जो बहुत क्लेम करते हैं कई चीज़ों का लॉन्जिविटी वाले स्पेस में। उनके लैब में सब माइस है, डॉग्स हैं, सब कुछ थे, सब देखा हमने। लेकिन जितने डीप स्टडी की, उसमें यही निकल के आया कि there were favorable markers when they tested after 10 years. Very much possible. That favorable markers doesn't mean that life has become big or life has become longer. It is like आप अपनी कार को बड़ा चमका लो, सफाई करके, उसके बाद इंजन विंजन साफ कर लो, तो वो लंबी नहीं हो जाती। बिल्कुल सर, ऐसा मेरी स्टडी में तो यही निकल के आया। So there is a greater hype in around this AI and longevity kind of a thing. हर चीज़ का पॉजिटिव और You can sit and talk. सर, आई थिंक हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट हर जगह पे होता है। हमने सर इंटरनेट बबल के टाइम पे देखा था कि anyone with a .com in their name got millions and billions of dollars in funding, but मैक्सिमम कंपनीज कोलैप्स कर गई, बट उसके अंदर Amazon सर्वाइव्ड। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो एक्चुअल में काम कर रही थी। AI का आज का जो समय है, उसके अंदर भी ऐसा ही होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपको लगेगी तो पूरी दुनिया बदल देगा, बट शायद वो नहीं करने वाला। जहाँ तक AI आपके लिए फेवरेबल होने वाला है, आपके काम को कम कर देगा। जहाँ पे एक ह्यूमन की ज़रूरत है, जैसे सर ने बोला इन द वेरी स्टार्टिंग सर, कि एक एम्पैथी AI नहीं दे सकता, वो एक इंसान ही दे पाएगा। डायग्नोसिस AI कर सकता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट AI रिकमेंड कर सकता है, विच ट्रीटमेंट विल वर्क बेटर उसको भी रिकमेंड कर सकता है। और आने वाले टाइम में विद द एडवांसमेंट ऑफ AI, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की क्या ड्रग क्या काम कर सकता है, उसका मॉडलिंग करना, इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग जॉब, जिसको बहुत ही फास्ट तरीके से AI कर सकता है। तो नो डाउट इसके अंदर बहुत सारी हाइप है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें लगती है कि हम पूरी दुनिया में चेंज कर देंगे, जो कि शायद नहीं होगी, बट आप इसको एज अ वेपन यूज़ कर सकते हैं, अपना काम आसान करने के लिए नहीं, बट अपने को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए। जैसे सर आपने AI के बारे में बताया, तो ये आपने कहा कि ये AI वर्कफोर्स को कम कर देगा, इट विल प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट कि कैसे उस डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं। बट इफ़ वी रिलाई ऑन AI वॉन्ट आर इंटेलेक्चुअलिटी डिक्लाइन। हम अगर उस पर रिलाई हो जाएंगे तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, जिसने एवोल्यूशन की थ्योरी से अपने आप को डेवलप करना सीखा है, वो कैसे काम करता है, तो वो डिक्लाइन नहीं कर जाएगा। नहीं, ये बात तो नहीं है कि वो डिक्लाइन कर जाएगा, क्योंकि AI इज़ नथिंग बट whatever has been done so far, उसी को ही वो एनालाइज करके आपको वापस देता है। Sorry to interrupt you, but as we seen the age of social media has come, the attention span of a human has been declined significantly. वो तो अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे और हर समय आप मोबाइल फ़ोन पे सोशल मीडिया में सुबह उठते हैं हम, तो सबसे पहली चीज़ आप पकड़ते हो, हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ते हो, तो वो ह्यूमन इंटरेक्शन आपका दूसरे ह्यूमन बीइंग से ख़त्म होता जा रहा है। That's what I'm talking about. If we rely on AI, क्या सेम consequence है उसका आने का चांसेस हैं या नहीं है, मतलब that's what I want to ask. वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहला तो आपको जो शायद साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि हमारे दिमाग में हमेशा एक नेगेटिव बायस होता है, जिसकी वजह से आज सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा है। तो नेगेटिव बायस हम हमेशा पहले लेते हैं कि भाई AI से नुकसान क्या होगा, पहले वो समझ लेते हैं। आप बिल्कुल सही हो, ये हो सकता है, लेकिन अब इसका पॉजिटिव साइड आप सुनो। आज के डेट में, या आज से 10 साल 15 साल 20 साल की अगर मैं बात करूं, कंटेंट क्रिएटर्स नाम की कोई प्रजाति होती नहीं थी इस दुनिया में, राइट? एनीवन हु वांटेड टू एक्ट
उसको यशराज फिल्म के पास जाना पड़ता है या किसी बड़े बॉलीवुड हाउस के पास जाना पड़ता है या फिर किसी अच्छे खानदान से बिलोंग करना पड़ता है। आज के डेट में जिसके पास एक फ़ोन और एक कैमरा है, ये एक कंटेंट क्रिएटर बन सकता है और रातों रात बड़ा बन सकता है अगर उसके पास टैलेंट है तो। AI आज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट को डेमोक्रेसी प्रोवाइड कर रहा है, यानी आपको एक बहुत बड़े फौज की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ में एक आइंस्टाइन बैठा है एज अ पर्सनल असिस्टेंट, जिससे आप कुछ भी पूछ सकते हो, जिससे आप कुछ भी रिसर्च करा सकते हो। नहीं, आई डिसएग्री विद दैट। जी सर। उसको मैं आइंस्टाइन तो नहीं कह सकता, क्योंकि उसका अपना दिमाग कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। AI का अपना दिमाग कुछ भी नहीं है, उसने अपना कोई इन्वेंशन नहीं किया। जो ह्यूमन इन्वेंशन है, जो पूरे इस इकोसिस्टम में अवेलेबल है, उसी को ही वो एनालाइज करके आपको बताता है। तो भगवान के लिए उसको आइंस्टाइन का नाम मत दीजिए। हाँ, लेकिन ये है ज़रूर कि आज जो एज ए डॉक्टर आपको खुद काम करना पड़ता है, उसको डायग्नोस्टिक के लिए उसकी पहले की क्या रिपोर्ट थी, अब की क्या है, आगे के अभी इस दौरान क्या ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ये सब जो एनालिसिस करना पड़ता था आपको, डॉक्टर को खुद को, ही इज़ ए टेक्निकल असिस्टेंट टू यू, हु कैन हेल्प यू टू असिस्ट एंड सेव योर टाइम। बट मैं अभी तो यही कहूँगा, ख़ास करके जो व्यूअर्स घर बैठे हुए इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि when you go to see your doctor next time, remember that doctor is also a human being, and they are also in a way all the time under stress. They are also kind of climbing a mountain. They also have natural sufferings. Be patient with them, be kind to them. They are trying to be your companions, and they were always trained well in this part of their work. So please be patient with them and be kind to them. इसके साथ ही I would say I'm thanking the Sharda University for arranging this session today, and I will thank to Divakar to have come after and enlightened us with his work. And I really like your enthusiasm of changing this world and making the country in a different league. Keep doing that. My challenge to that you was in a different context, in the context of the somewhat flaws in our education pedagogy, which we lack in terms of teaching empathy, teaching the collaborative efforts, teaching the communication skills sometimes. So those kind of things, and together if this country, 50% people work together, this country will be definitely a superpower. Thank you very much and wish you all the best. Thank you. Thank you. Thank you. All the best. God bless. God bless. Thank you.